Prime Minister Narendra Modi visited Arunachal Pradesh recently, where he laid focus on the massive potential for development in various sectors in the state and rest of Northeast. The Prime Minister, who attended the Statehood Day function of Arunachal Pradesh, highlighted the scope for growth in the state, besides inaugurating the first ever train to Delhi and a number of other projects. We have a report. Prime Minister Narendra Modi, who was in Arunachal Pradesh to attend the state's 29th Foundation Day celebration, assured the people that they would witness much more progress in the coming 5 years. The event held at the Indira Gandhi Park in Itanagar was attended by Union Railway Minister Suresh Prabhu, Union Minister of State for Home Affairs Kiran Rijiju, Chief Minister Nabam Tuki and Governor Lieutenant General Nirbhay Sharma. The Prime Minister also inaugurated the Arunachal Festival, a 3-day-long event highlighting the colourful and varied culture of the state. Dance performances by various tribes were the major attraction. मैं आज अरुणाचल के उज्जवल भविष्य के लिए, यहां के विकास के लिए और एक प्रकार से पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए अरुणाचल का विकास एक ग्रोथ इंजन बने, अरुणाचल इतनी तेजी से आगे बढ़े कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को भी आगे बढ़ने की ताकत दे, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से अरुणाचल ये सबसे बड़ा प्रदेश है। यहां का जनसंख्या कम है, लेकिन ताकत बहुत है। During his visit, the Prime Minister flagged off the first ever AC Express train from Naharlagun to New Delhi and the Naharlagun-Guwahati Intercity Express via remote control. The Naharlagun to Delhi air-conditioned weekly express train will complete the 2100-kilometer long journey in 38 hours. This will hugely benefit the people as they can reach Delhi directly. नॉर्थ ईस्ट के विकास में अगर सबसे बड़ी कोई बाधा रही है, वो बाधा रही है कनेक्टिविटी। रेल, रोड, एयर, ये कनेक्टिविटी जितनी बढ़ेगी उतनी इस क्षेत्र की ताकत राष्ट्र के विकास में काम आने वाली है। और एक प्रकार से आज अरुणाचल प्रदेश दिल्ली से जुड़ रहा है, ऐसा नहीं है। आज पूरा हिंदुस्तान अरुणाचल प्रदेश के साथ जुड़ रहा है। देश आपसे जुड़ रहा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले दिनों में इस रेल यात्रा के कारण कितनी बड़ी मात्रा में यहां टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों के लिए आने की सुविधा बढ़ेगी, लोग ट्रेनें भर भर करके आएंगे और यहां की खूबसूरत वादियां देखेंगे। It's an endeavor of the central government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji to link all the rich state capitals of the northeastern states to each other. This is the plan which is going to be now successful in the next few years' time, which will bring in 54,000 crores of investment in 23 projects in the northeastern states. In fact, even in this year itself, 14-15 will be spending 5,500 crores on railway projects in northeastern states alone. The residents of Arunachal Pradesh are happy with implementation of several development projects in the state. This is a very good initiative for Arunachal Pradesh, and firstly because of the bottlenecks in communication and distance between the capital and Arunachal Pradesh, lots of development schemes could not be initiated properly in our state. But I think this railway will bring lots of changes in Arunachal Pradesh. It will not only help people travel easily, but also facilitate in production of goods and business, etc.
The Prime Minister also inaugurated the Itanagar water supply project and the 132 kilowatt Nirjuli-Chimpu transmission power line project. Emphasizing on the huge potential for growth in the state, the Prime Minister also appealed the people to cooperate in harnessing the massive hydropower potential so as to bring about progress. हिमाचल प्रदेश ने हमारे देश में पानी में से बिजली में सफलतापूर्वक आगे बढ़ा, हिमाचल की आर्थिक स्थिति में बदलाव आया। ये ताकत आपके अंदर भी है। ये बात सही है। इस प्रकार के प्रोजेक्ट के लिए जिन लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, जिन लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है, उनके लिए पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दोनों चीजों पर बल देना चाहिए। कोई गरीब से गरीब परिवार दुखी नहीं होना चाहिए, उनको कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए, पहले से अच्छी जिंदगी का अवसर मिलना चाहिए और दूसरी तरफ बिजली पैदा करने की दिशा में अरुणाचल प्रदेश ने आगे बढ़ना चाहिए। Our state is endowed with unparalleled natural resources, 82% quality forest, huge potential in agriculture, horticulture, temperate and tropical, unique geology with high quality reserves of coal, oil, in addition to other minerals such as graphite, dolomite, etc. Matchless tourism potential, treasure house of rare medicinal plant. The perennial rivers of my state has earned our state the name hydropower capital of India. However, because of institutional bottlenecks, unfavorable policies, corporated procedure for clearances, and perceived low priority reason, these resources are yet to be sustainably harnessed. While highlighting the various development schemes for the region, the Prime Minister also stressed on the need to tap into the potential of organic farming in the northeast. He announced that 18 new FM channels will be started in the region and the government will set up 6 new agricultural universities. हम चाहते हैं कि पूरा नॉर्थ ईस्ट दुनिया के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग पाने का एक बहुत बड़ा कैपिटल बन जाए और दुनिया में जो भी लोग होलिस्टिक हेल्थ केयर में विश्वास करते हैं, वो ऑर्गेनिक चीजें पसंद करते हैं, वो यहाँ के फल हो, यहाँ का अनाज हो, ये ऑर्गेनिक चीजें उनको बाजार में मिलेगी। दुनिया आपके यहाँ आकर के खड़ी रह जाएगी माल खरीदने के लिए और रुपया डॉलर में जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाई, ये ताकत है नॉर्थ ईस्ट में और हम इसके लिए 6 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को चालू करने वाले हैं। The northeast region has been lagging behind in socio-economic development owing to a prolonged period of insurgency. However, the centre is now giving a lot of priority to maintain peace and usher in all-around development in the region.